तो advantages and limitation of powder metallurgy, in the short form P/M, that is indicate for powder metallurgy. Then one major advantage is the cost effectiveness in producing certain parts to be compared certain parts as compared to other manufacturing process. And this is due to the fact that parts can be made with close tolerance और surface finish जो कि eliminates करते हैं necessity of any further processing. So scrap is eliminated and also the labor cost जो है वो low since no skilled worker are required as the process can be fully automated. This is the first advantage. Second advantage is that certain types of parts can be made up only powder metallurgy by mixing different metals or non-metals, metals or ceramic to achieve desired properties of the component. Some examples are electrical contact point must be both wear resistance or refractory or have a good electrical conductivity, or for this may contribution of metals have been developed WCU, WCO, WAG, MOAG, NIW, copper and NIAG. As is evident, the combination include metals are the wear resistance or refractory, that is WMO and nickel etc, and metals which are electrical conductor, that is copper or Ag. Sometimes compositions are W or Mo with the 20 to 25 to 50% Ag, or copper and Wc with 35 to 55% Ag. There is no another way of combination combining them except powder metallurgy. इसमें क्या करेंगे, if melted these metals will not mix but will separate like oil and water. And further advantage there are combining metallic और non metallic material जैसे कि electrical के brushes for motor are made by blending copper or Ag, that is 20 to 97% with graphite. Tin, lead, iron or silica may also be added in small quantities to enhance wear resistance, that is iron or lead cannot be mixed in the liquid state. Another example of producing heavy duty metallic frictional materials for brakes or clutches such as a copper SN or a copper ZN alloy with embedded silicon oxide or aluminum oxide. And other advantage, that is the metals with a melting point जिसका टेम्परेचर जो होता है टू हाई फॉर कास्टिंग हो जाता है, कैन बी प्रोसीड बाय powder metallurgy. इन एग्जांपल के लिए जो particles of WC or CO are mixed together and cobalts act as the binder for WC particles to produce cemented carbide जो कि act करता है as a tool material की तरह. Similarly, W filaments for in incandescent light bulbs जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं पाउडर मेटलर्जी के थ्रू. फिलामेंट जो कि हाई शुड हैव अ हाई डक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट और प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर दिस डब्ल्यू इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल. इस प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिंग बिलेट्स ऑफ डब्ल्यू फॉर्म और पाउडर बाय पाउडर मेटलर्जी मेथड. बेसिकली इसमें जो वायर्स जो होते हैं वो मेड अप बाय फर्स्ट फोर्जिंग और देन वायर ड्राइंग दीज बिलेट्स. देन प्रोडक्शन ऑफ सिरेमिड जिसमें सिरामिक प्लस मेटल और टिपिकल कंपोजिशन जो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और अप टू 10% ऑफ WMO, बोरान और टाइटेनियम ETC. ये जो मटेरियल्स होते हैं वो बिंग इंक्रीजली यूज कर सकते हैं एज अ टूल मटेरियल. डायमंड बॉन्डेड विद मेटल जो कि ट्रूली कॉपर एंड 15 to 20% tin. Porosity of the part can be controlled over a wide limit of to fabricate product with a special features और special screens और filter जैसे कि from bronze, nickel और stainless steels जो होते हैं पाउडर्स इसका यूज़ करते हैं for controlling the flow of gases or liquids जो कि made with porosity as a high as 80% और less porous structures जो कि create करते हैं by self lubricating bearings, slide strips, expansion plates, gears, pumps, cams, etc. Parts of this kinds of synthetic with a porosity of 40% of the total volume जो कि followed by the impregmentation
with a suitable lubricant, parts with unusual damping properties resulting in a quieter operation for mating parts can be produced. And another is the magnetic application in this. There are these includes magnetic soft material जैसे कि Fe, Fe3Si और Fe50Ni, ये जो हैं because of their mechanical softness or difficult to machine, but इसको हम लोग easily form कर सकते हैं into the final shape by powder metallurgy. Alnico permanent magnet FeLNiCO जो कि हम can be synthetic being superior to these cast. अदर एडवांटेज में बात करते हैं तो पाउडर मेटलर्जी के कि पाउडर्स जो होते हैं वे अवेलेबल होते हैं इन प्योर स्टेट, जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं आइटम्स फॉर एक्सट्रीम प्योरिटी. हाई प्रोडक्शन रेट्स होता है जो कि कैन बी 500 टू 1000 पीस पर आवर, और साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स शेप को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. और बाय मेटालिक और लेमिनेटेड स्पेशल पर्पस पार्ट्स जो होते हैं इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं बाय मोल्ड लेयर या डिफरेंट मेटालिक पाउडर्स जो कि सिक्योरली और परमानेंटली इंटरलॉक्ड होते हैं. These are the powder metallurgy advantage. And what are the limitations? Limitations, that means dies और equipment जो cost होती है बहुत ज़्यादा हाईली होती है, cost हाई होती है, और इस process में economically feasible only for mass production. Minimum production run जो होता है वो 10,000 parts needed होता है to offset the tooling cost. और dies जो made for long production runs in the order of 1,50,000 to 2 lakh पार्ट्स. और जो मटेरियल कॉस्ट होती है इन पाउडर फॉर्म की वो हाई होती है, और जब कभी भी हाई पाउडर मटेरियल कॉस्ट जो होती है यूजली ऑफसेट बाय द ऑलमोस्ट टोटल एब्सेंस ऑफ स्क्रैप, तो पार्ट कॉस्ट जो होती है आर ऑल्सो रिड्यूस बाय एलिमिनेटिंग मशीनिंग. लेबर कॉस्ट ऑल्सो कंपेरेटिवली लो. मेटल पाउडर्स और समटाइम डिफिकल्ट टू स्टोर विदाउट some deterioration. And what are the next limitation is there is a little flow of metal during the compaction, so interact design in the products are difficult to attain. And another limitation is that जो completely dense product होते हैं वो not possible by this process. Also a uniformly high density product is very difficult to produce, and part size and weight are restricted. These are regulated by the capacity of available press and compressibility characteristics of the various powder combination. Powder metallurgy is a principally restricted to the manufacture of comparatively small parts. Parts weight जो can be under the 5 newtons. However, ये जो parts हैं weighing up to 900 newtons have been successfully mass produced by powder metallurgy. Some metals powder जो होंगे वो finely divided state, जैसे example of aluminum, magnesium, zinc and Ti present in explosion for die explosion and fire hazards. Product design limitation होती है which will be discussed that, and residual porosity होती है for make centering. These are the